Hello everyone, this is Dr. Prachi Singh, Assistant Professor Mathematics, Government VYT, PG Autonomous College Durg. Today we are taking MSc second semester paper first, Advanced Abstract Algebra, Unit 2nd, Linear Transformation, and particularly regular and singular transformation. In this lecture we take some theorems on regular and singular transformations. Now definition of inversible and singular regular element. Definition: an element T belongs to AV is called right inversible if Ts is equal to 1 for S belongs to AV, and left inversible if St is equal to 1, and inversible if St is equal to Ts is equal to 1. This S must be unique. S must be unique. A function which is inversible is called regular. A function which is not inversible is called singular. Example of a function which is only one side inversible. If S qx is equal to d upon dx qx and t qx is equal to 1 to x qx dx, then st is equal to 1. पहले इंटीग्रेशन करें फिर डिफरेंशिएशन करें, इट इज इक्वल टू 1. एंड यदि पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें बाद में इंटीग्रेशन करें तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास एक एलिमेंट आता है प्लस सी, एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो टी एस इज नॉट इक्वल टू 1. सो टी इज लेफ्ट इन्वर्सिबल बट नॉट राइट इन्वर्सिबल. If T belongs to AV, where V is finite dimensional over F, then T is regular. If and only if T maps V onto V. Proof: if T is regular, then T is inversible, that is T inverse exists. This is the definition of regular. We know that T is a function from, T is a homomorphism from V to V, implies that TV, that T image of this V on V is a subset of V. It means T small v belongs to TV for all small v belongs to capital V. So T inverse TV belongs to TV implies that V belongs to TV. But we take V belongs to V, so V subset TV. But always TV subset V होता है. It means V is equal to TV. Hence T is onto. Suppose T is not regular, then there exists a vector V1 belongs to V, V1 not equal to 0 such that T V1 is equal to 0. Since V is finite dimensional, so let dimension V is equal to n. Hence V1, V2 and so on Vn belongs to V forms a basis of V. Dimension V, it means it basis has n elements. Now images, अब इनका images बना दिए तो TV1, TV2 and so on TV1 are elements of TV. ये सारे elements हो गए TV के. Since TV1 is equal to 0, TV1 is equal to 0, so elements हो गए TV2, TV3 and so on TVn. They are n minus 1 in numbers. Expand TV और ये TV को expand करते हैं. So dimension TV is equal to n minus 1, which is less than dimension V. Dimension V is equal to n और dimension TV is equal to n minus 1. So TV subset V. TV subset V. So T is not onto. T is not onto. Hence, if T is not regular, then T is not onto. That is, if T is regular, then it is onto. Next theorem: if V is finite dimensional over F, T belongs to AV is inversible or regular if and only if the constant term of the minimum polynomial satisfied by T is not 0. Proof: let Px is equal to summation alpha k x to the power k,
where all alpha k belongs to f and alpha k is not equal to 0 is the minimal polynomial for t. It means satisfied by t. Over f, it means all these coefficients must belongs to f. If alpha 0 is not equal to 0, then this polynomial is satisfied by t, so pt is equal to 0. pt is equal to 0 कर दिया तो ये हो गया समेशन अल्फा के टी टू दी पावर k इज इक्वल टू 0. अल्फा के को एक तरफ रख दिया, बाकी को दूसरी तरफ ले गए, फिर अल्फा के को भी दूसरी तरफ ले गए, फिर ये जो आया उसको हमने ले लिया बीटा 1, ये हुआ बीटा 2 एंड सो ऑन, ये हुआ बीटा k. इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू t को बाहर निकाल दिए सब एक साथ, ये जो ब्रैकेट है उसको ले लिया s और t. s इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 2 to k बीटा k t टू द पावर k माइनस 1. s is inverse of t, so s t is equal to 1, so s is inverse of t. नेक्स्ट ये पहली बात प्रूफ हो गई. सपोज अल्फा 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म इज 0, देन रिलेशन बन गया अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 2 टी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अल्फा के टी टू द पावर के इज इक्वल टू 0. टी को बाहर निकाल लिया तो बचा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टी प्लस एंड सो ऑन अल्फा के टी टू द पावर के माइनस 1 टी इज इक्वल टू 0. इफ टी इज इनवर्सिबल देन टी इनवर्स एग्जिस्ट, तो टी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टी गायब हो गया. सो ये बच गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टी प्लस एंड सो ऑन अल्फा के टी टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स टी सेटिस्फाइज ए पॉलिनोमियल. टी सेटिस्फाइज ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री के माइनस 1, विथ डिग्री के माइनस 1 which is less than the degree of minimal polynomial. मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है, विच इज कंट्राडिक्शन. सो जो हमने लिया है वो गलत. हमने लिया है अल्फा 0 इज इक्वल टू 0, बट अल्फा 0 इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स इफ टी इज इनवर्सिबल रेगुलर देन इट्स कांस्टेंट टर्म ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू 0. If V is finite dimensional and T belongs to AV is singular, it means not regular, then there exists a S belongs to AV such that TS is equal to ST is equal to 0. Proof. Earlier we see that if T is regular, not singular, then the constant term of minimal polynomial satisfied by t is not equal to 0. इससे पहले थ्योरम में हमने देखा कि कांस्टेंट टर्म मस्ट नॉट बी 0. Here t is singular, it means not inversible or regular. So the constant term of the minimum polynomial satisfied by t must be 0, क्योंकि ये रेगुलर का उल्टा है. तो रेगुलर में जो बात प्रूफ होती है वो सिंगुलर में नहीं होगी. तो वहाँ कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू 0 था, अब कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 होगा. इफ पी एक्स इज इक्वल टू समेशन अल्फा के एक्स टू द पावर के इज द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर टी, देन अल्फा 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0. सो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और अल्फा के एक्स टू द पावर के. implies that pt is equal to summation alpha k t to the power k is equal to 0. That is t satisfies px. It means अब k is equal to 1 से आगे बढ़ना है तो अल्फा 1 t प्लस अल्फा 2 t से प्लस एंड सो ऑन अल्फा k t to the power k is equal to 0. सभी में से t बाहर कर दिया तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 t प्लस एंड सो ऑन अल्फा k t to the power k माइनस 1 इंटू t इज इक्वल टू 0. ये जो ब्रैकेट है उसको हमने ले लिया s, तो एस टी इज इक्वल टू 0, वेयर एस इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टी प्लस एंड सो ऑन अल्फा के टी टू द पावर के माइनस 1. अब ये जो एस है क्या एस 0 होगा या नहीं होगा? इफ एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0,
It means alpha 0, alpha 1 plus alpha 2t plus and so on, alpha k t to the power k minus 1 is equal to 0. It means t satisfies a lower degree polynomial than minimal polynomial px. px की डिग्री है k, उससे भी कम डिग्री k माइनस 1 के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा कौन? t. लेकिन px तो मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो मिनिमल से कम तो हो नहीं सकता. It means which is contradiction. So s is not equal to 0. S is not equal to 0 such that st is equal to 0 where s is not equal to 0. Next theorem. If V is finite dimensional over F and T belongs to AV is right inversible, not inversible. It is only right inversible. Then we have to prove that T is inversible. Proof. Let T is right inversible, not inversible or regular. Only it is singular. Then singular की प्रॉपर्टी से st is equal to 0 और इन्वर्सिबल की राइट इन्वर्सिबल के लिए tp is equal to 1. For some s and p belongs to AV, here s is not equal to 0, p is also not equal to 0. Then 0 is equal to STP, ST is equal to 0 है, तो STP, एसोसिएटिव लॉ STP, so STP is equal to 1, ये 1 हो गया, so S, it means S is equal to 0, which is a contradiction, because S is not equal to 0, so it is a contradiction, that is T is only regular are inversible, not only right inversible. Theorem. If V is finite dimensional over F, then T belongs to AV is singular. If there exists a V not equal to 0 such that TV is equal to 0 and is this a small v belongs to capital V. Proof. Since T is singular, then there must exist S belongs to AV, S not equal to 0 such that PS is equal to ST is equal to 0. अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा. Implies that there exists an element W belongs to V such that SW is not equal to 0. Since S is a function from V to V, तो यदि इस V का अवयव एलिमेंट W है, तो इस V का एलिमेंट होगा with respect to S, SW. This SW is written as small v. Let now take TV is equal to T. V की वैल्यू रख दिया SW. SW is equal to TSW is equal to 0. Since ST is equal to 0, TS is equal to 0, so 0 is equal to 0. Implies that TV is equal to 0. यही हमको प्रूव करना था. If TV is equal to 0 or V is not equal to 0, then STV is equal to 0. तो V 0 नहीं है, it means ST is equal to 0 होगा. It means T is singular. तो ये दोनों तरफ से प्रूफ होता है. Hence the theorem. We know that rank of T is written as RT. If T is regular, then RT is equal to dimension V. Theorem. If V is finite dimensional over F, ST belongs to AV, then पहली चीज RST or RTS is less than or equal to RT. In other words, RST is less than or equal to min RT RS. Second, S is regular in AV, then RST is equal to RTS is equal to RT. Proof. S is a mapping from S to V. So S image of this V is subset of this V. So SV is subset V. So T SV subset TV implies that dimension, अब हटा दिया जाए तो ये हो गया dimension TSV is less than or equal to dimension TV. Implies that R TS, अब ये हट जाएगा, R TS less than or equal to R T.
Similarly, RTS is less than or equal to RS. So RTS is less than or equal to min RT comma RS. If S is regular or inversible, then SV is equal to V. Again TSV is equal to TSV is equal to SV की जगह V रख दिया तो TV. So RTS is equal to dimension TSV. Dimension TV is equal to RT. So RST is equal to RT. Similarly RTS is equal to V हो जाएगा RST is equal to RT. Now RSTS inverse is equal to R. इसको एक साथ रख लिया T और S इनवर्स को. अब आप देख रहे हैं TS और ये ST, तो यहाँ पर TS इनवर्स है तो ये हो जाएगा S इनवर्स T. फिर S और S इनवर्स एक दूसरे में समा जाएंगे तो ये हो गया RT. सो RSTS इनवर्स इज इक्वल टू RT. कब? व्हेन S इज रेगुलर. रेगुलर इट मीन्स इनवर्सिबल. Theorem: if TS belongs to AB, S is regular, then T and STS inverse have the same minimal polynomial. Proof: let the minimal polynomial of T is Qx, that is Qt is equal to 0. Qx is satisfied by T, so Qt is equal to 0. Now S is regular, so there exists S inverse such that S inverse is equal to S inverse S is equal to 1. Take ST S inverse whole square, then ST S inverse ST S inverse S inverse और S को कंबाइन कर दिया तो ये हो गया 1 और T मिलके T स्क्वायर. सो S T स्क्वायर S इनवर्स. सिमिलरली S T S इनवर्स होल क्यूब इज इक्वल टू S T क्यूब S इनवर्स. Hence in general S T S inverse to the power n is equal to S T to the power n S inverse. Hence Q S T S inverse is equal to S or Q T S inverse. Since Qt is equal to 0, so it is equal to 0. That is, if Qx is satisfied by S T S inverse, hence if Qx is the minimal polynomial for T, then it is also minimal polynomial for S T S inverse. Proved. Hence in this session we have proved many theorems for regular and singular linear transformations.